Hello guys, my name is Rajan. Thumbs up, thumbs down below, share and subscribe and slap a like on the bell icon to get my future videos updates regularly. दोस्तों लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो ना और बेल आइकन घंटी पे क्लिक कर दो ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की अपडेट टाइम टू टाइम पर मिलती रहे ना। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हमेशा की तरह। उससे पहले मैं आपको बता दूं मैं वीडियोस बनाता हूं फ्लर्टिंग और डेटिंग टिप्स पे, है ना। और साथ ही साथ जो मैं वीडियो का कंटेंट आपको परोसता हूँ पहले मैं कोशिश करता हूँ कि वो कंटेंट मैं हिंदी लैंग्वेज में बोलूँ और फिर वही सेम कंटेंट मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज में परोसूँ फिर, ताकि आपको फ्लर्टिंग और डेटिंग की टिप्स तो मिल ही जाए फ्री में, साथ ही साथ आपको स्पोकन इंग्लिश सीखने में भी हेल्प मिले। सो गाइज, लाइक यू नो, आई मेक वीडियोज ऑन फ्लर्टिंग एंड डेटिंग टिप्स. And besides teaching you flirting and dating tips for free, I usually make content, so content I first try to speak in Hindi language, then I follow it up in English language in order for you to learn spoken English as well as flirting and dating tips for free. So guys, today's topic will be very interesting like always. तो दोस्तों आज की टॉपिक की अगर हम बात करें, आज का टॉपिक है, कई बार आपने सुना होगा बहुत स्टबन मतलब ढीठ, बहुत ढीठ लड़कियां होती हैं, मतलब वो ना ही आपको हाँ कह रही है और ना ही आपको ना कह रही है ना, बीच में अंधर में आपको लटका रखा है ना आप यहाँ के रहे ना आप वहाँ के रहे, ना ही वो आपको आपका प्रपोजल एक्सेप्ट कर रही है और ना ही आपका प्रपोजल वो डिक्लाइन कर रही है, तो वो मतलब बीच में अटके हुए आप। तो ऐसी लड़कियों के साथ कैसे डील करना है? सो गाइज, इन टुडेज वीडियो आई विल बी टीचिंग यू how to overcome certain species of girls who are neither accepting your proposal nor she's rejecting you, and at the same time she's even accepting your gifts, and it's been like 4 or 5 months, she's not giving you any satisfactory answer which your ears want to listen. So how to deal with these type of girls I'll be teaching you in my today's video. So first let's start in Hindi language. तो दोस्तों आपको मालूम है ना, इस टाइप की लड़कियों से डील करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, है ना, कि लड़कियाँ मतलब कहानी का मोटिव ये है कि लड़कियाँ अटेंशन के लिए कितनी भूखी होती हैं। तो एक बार मेरे को ना बहुत ही बेइंतहा खूबसूरत लड़की नज़र आई, है ना, तो मुझे मतलब पहली नज़र में उससे प्यार हो गया। मतलब इतनी खूबसूरत लड़की, मतलब गुलाबी गुलाबी होंठ उसके, है ना, एकदम जवां खूबसूरत सुनहरे बाल, तो मतलब मैं उसको देख के पागल हो गया। तो मैं सोचूं भाई कैसे आशिकी शुरू करूं अपनी उससे, है ना। तो मैं बात कर रही है तो बात भी कर रही है वो ना, अब हंस भी रही है मेरी तरफ देख के ना, पूरे इशारे कर रही है, मुझे लगा पड़ जाएगी भाई, ये तो मेरे चांदी लग गई, मेरी लॉटरी लग गई। अब लेकिन भाई वो 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, ऐसे ही करते है ना। अब कई लड़कों ने मुझे बोला भाई चालू लड़की है, लेकिन मुझे ऐसा भी लगा कि चालू है वो, पर यह है कि वो उसने मुझे बीच में लटका के रखा, ना ही वो हाँ कह रही है ना ही कह रही है। अभी मैंने सोचा उसको मैं कुछ तोहफे ला के देता हूँ, मैंने उसको गिफ्ट्स दिए, शॉपिंग कराई, तो वो भी ले रही है ना, और मुझे साथ में साथ मना भी कर रही है कि तुम पैसा क्यों खर्चा कर रहे हो मेरे पे, तुम क्या मेरे बॉयफ्रेंड हो। तो मतलब ना ही वो मुझे बीच में लटका दिया, ना ही मुझे हाँ बोल रही है ना ही ना कह रही है ना। तो अब मैं परेशान हो गया भाई, क्या करूँ इस लड़की का। 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, और मेरे को ऐसी उसने लत लगा दी अपनी कि मैं जब तक दिन में उसको 5 बार ना देख लूँ तो मेरा दिन पूरा नहीं होता यार, ना मैं अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट कर पा रहा ना कुछ। तो मैं करूँ तो क्या करूँ, एक दिन तो हद ही होगी भाई। मैं उसको मतलब बहुत बुर की तरह देखता था, मतलब उसकी फ्रेंड्स, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था, मतलब मैं उसको देखता था ना तो उसकी बहन परिवार वाले भी देख रहे हैं, उनको भी सबको मालूम पड़ गया था कि ये लट्टू हो गया इस लड़की के चक्कर में। मतलब मैं इनफैक्ट उसकी माँ के सामने, उसके बाप के सामने भी उसको घूरता रहता था, बहनों के सामने पूरे। तो पूरा मैं बदनाम भी हो गया एक तरीके से उसके चक्कर में, है ना, कि ये तो भाई उसके प्यार में लट्टू हो गया है। तो अब मैं करूँ तो एक दिन जैसे मैंने बताया हदी होगी, वो आई मेरे सामने, अब मैं उसको घूर रहा हूँ तो मुझे बोलती है मत घूरो मेरे को, है ना। तो मैंने कहा चल भाई उसकी बात मानते हैं, बुरा ना मान जाए। मैंने आंखों पे ऐसे अपने दोनों हाथ ले लिए, ऐसे रख ली, ठीक है। अब मुझे वो नज़र नहीं आ रही है, अब वो मुझे क्या फिर मुझे बोल रही हो कि तुम ना अपनी जो उंगलियां हैं ना उनके बीचों में से ऐसे ऐसे करके मुझे झाँक रहे हो। मैं झाँक भी नहीं, कहा यार मैं कहाँ झाँक रहा हूँ। तो वो बोलती नहीं तुम झाँक रहे हो, तो अब मतलब देखो तो प्रॉब्लम, ना देखो तो प्रॉब्लम, है ना। तो ऐसे करके वो उसने मुझे पागल कर दिया लड़की ने, ठीक है। ना ही वो हाँ कह रही है ना ही ना कह रही है, बोल रही तुम बीच में से झाँक रहे हो, तो ये क्या बात हुई भाई, है ना। तो मतलब मॉरल ये स्टोरी का बताने का, लड़कियां मतलब टेंशन की इतनी भूखी होती हैं, सब नहीं, ऐसी टाइप की कुछ लड़कियां होती हैं
मतलब अगर आप उन्हें अटेंशन दे रहे हो तो उन्हें अच्छा भी लग रहा है, बुरा भी लग रहा है ना। और जिस दिन आपने उनको अटेंशन देना बंद कर दिया तो उस दिन उन्हें और ज़्यादा बुरा लग जाता है ना। समझ सकते हो आप। तो भाई मैं तो इस मर्ज़ की मुझे कोई दवाई नहीं मिली, मैंने कहा मैं क्या करूँ, है ना। फिर एक अपने डॉक्टर हकीम साहब थे, उन्होंने मुझे ट्रिक बताई, तो मैंने अप्लाई करी, वही मैं ट्रिक आपको सिखा रहा हूँ आज। तो इस टाइप की लड़कियों को डील करने के लिए आपको क्या करना है, आप ना उनको एक दिन ऐसा बोल दो सीधा कि देखो रहने दो यार, तुम मेरे टाइप की नहीं हो, इतना बोल दो बस। बात करते करते ना, बात कर रहे हो, अजीब सी शक्ल बनाओ और बोलो तुम मेरे टाइप की नहीं हो, और ना कोशिश करो कि आप एक हफ्ता उससे बात ना करो। मालूम है भाई, एक हफ्ता आप नहीं बात करोगे तो आप मर जाओगे। जिस लड़की को आप मतलब दिन में 5 बार देखते हो, तो 5 बार देख के भी आपका मन नहीं भरता, तो वो आप एक हफ्ता नहीं कर सकते। अगर एक हफ्ता नहीं कंट्रोल कर पा रहे तो कोशिश करो पहले 2 दिन, फिर 3 दिन, धीरे धीरे अपने दिल को थाम के बैठो। लेकिन आपको करना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये लड़की आपका ऐसे ही बेवकूफ़ बनाती रहेगी और किसी दिन किसी और के साथ निकल लेगी। तो सीधा उसको बोलो कि आप मेरे टाइप की नहीं हो, फिर देखो उसका रिएक्शन क्या आएगा। उसी दिन बोल देगी आपके सामने ही, वो तभी बोल देगी कि अच्छा मैं तुम्हारी टाइप की नहीं हूँ, है ना। फिर आप उसको भाव मत देना, निकल जाओ वहाँ से। फिर आप देखना 1-2 दिन बाद ही वो, ये मतलब बहुत पावरफुल टेक्निक है। 1-2 दिन में क्या है, तुरंत असर करने वाली है। तो मतलब बहुत ज़्यादा एमजी की दवाई है। तो वो लड़की देखना अपने आप आपके पास आएगी 2 दिन बाद, 3 दिन बाद। जब तक नहीं आया तो मत जाओ उसके पास। हाँ, मैं ये नहीं बोलूँगा कि एक हफ्ते से ज़्यादा आप वेट कराओ, पर हाँ, एक हफ्ता अगर आपकी ट्रिक कामयाब नहीं होती तो फिर छोड़ देना इसको। लेकिन मुझे लगता है 2 दिन में ही कामयाब हो जाएगी। तो पहले ट्राई करो 2 दिन तक, है ना, उसको बात मत करो, तो खुद आएगी देखना आपके पास। बोलेगी कि खुद उसको लगेगा ना भाई, आज सूरज मतलब पूरब की जगह पश्चिम से क्यों निकल रहा है, ये तो दिन में 5 बार मेरी तरह देखता था। तो उसको भी आपकी आदत पड़ चुकी थी ना देखने की, उसको भी चाहिए कोई ना कोई तो अटेंशन दे मुझे, है ना। अब उसको अटेंशन मिल नहीं रहा है तो वो और ज़्यादा पागल हो जाएगी। तो ऐसे करके वो फिर हो सकता है आपके पास खुद आए, वो पूछेगी कि क्या हो गया आजकल, तुम मेरे से बात नहीं कर रहे हो, ये वो, है ना। तो ऐसे करके फिर वो आपका ऑफर उसको एक्सेप्ट करना होगा तो ज़रूर करेगी, है ना। तो यही आज की टेक्निक थी, है ना। अभी हम इंग्लिश में बात करते हैं इसकी। So guys, today I'll be discussing about a very powerful technique in which, before discussing this technique, let me tell you, my personal story. The moral of the story is, of course, it will be, girls are hungry for attention. So they can go to any extent to grab that attention. If you are if you stop giving her attention, then she will be like I said, she's hungry for attention. So then she might go to any extent to grab that attention. So once I happened to see a beautiful girl, gorgeous girl. It's like a Cinderella type of princess type of a girl, and her pink lips, and I was so flattered over her, and I couldn't sleep. So I was gazing her at all this time, and I somehow one day took courage and I proposed that girl. So she also gave me good signals, and I was over the moon. I was overwhelmed by her approach. So I thought, I struck a lottery, and she could be my girlfriend or my wife. So and it won't take me it will take around some days for me to get that girl in my arms. But what I thought happened opposite. That girl was like always bluffing me. She was neither she was accepting my proposal, nor she was rejecting my proposal. She left me in a midway, and I was getting frustrated with each day of passing. And she, like I said, she left me in a midway. I couldn't make out, and I was getting frustrated with each day passing. So one day she even went to extreme. She one day I was gazing at her, and very badly, and I was like, I couldn't control myself. She was looking so irresistible that day, and I kept gazing at her, and then she suddenly questioned me, and she warned me that don't look at me like that, I don't like it. So I was like, no, I thought that she was getting annoyed at me. So I suddenly I took my hands and covered my eyes with my hands. So I thought, no, she didn't like it. But it happened
in opposite way, she was liking my act when I was gazing at her, at the same time, she again questioned me, why are you peeking between your fingers? You kept your hands in front of your eyes, but still I can see you peeping and watching me, and then she smiled at me, and I was like, if I was looking at you and I was gazing at you, you were questioning and warning me. But now when I stopped looking at you and I kept my hands over my eyes, then again you are questioning me that you are peeping between your fingers and looking at me. So then I realized, somewhere in my mind that, girls are hungry for attention. If if you give them, too much of attention, and one day you start, stop giving attention, then she, don't like it. They are, in short, the girls are hungry for attention. That day I realized. So I was like, yeah, let's make a move, and one of my friends, fortunately for me, gave me a wonderful tip that day, and this is the tip, I am today discussing with you. He told me, why don't you, tell her to her face that you are not my type. Just tell her to the face, you are not my type, and just stop talking to her for 2 days or 3 days, maximum for 1 week. I won't, tell you to stop seeing her for a week. I know it's very difficult for a person, if you have gone to that extent, if you are not, seeing that for a week, I know it can be very harmful for your for your brain. I can understand it. I understand the feelings of every lover. So same was the case with me that day, and then I took the heavy stone, and kept on my heart. But I took that tip with the open arms, and I one day I told her to her face, that you are not my type. Don't say that you don't like her, just tell her that you are not my type, and stop seeing her for a day or 2 day or 3 day, maybe a week, and look what happens, and you will be amazed to know, like I said, I told you my story also with an example. Girls are hungry for attention, so it is quite likely, then after 2 days or 3 days, she will come back and ask about you, and this technique is very powerful. Why she will, now come back to you is because, because she has been addicted, by your acts for like 4 months or 5 months, for non-stop you are seeing her, again and again, and like I said, I was not able to concentrate on my studies, on my future, and so I was like, always, watching her. So when I stopped watching her, and I told her that you are not my type, then she became very angry from inside. She became very infuriated, and she became very furious with me. Oh, why isn't he looking at me? Why is, like, son, I mean, why are things going in opposite way? Every day he was looking at me, and why now? Then she will get puzzled, deep inside her mind or heart, and then it is quite likely that she will come back to you now permanently, and then all the best, then you can grab her and she can become your girlfriend. So I just wanted to discuss this tip with you. It's very powerful technique, but the warning is that don't try it. Don't stop talking to her for more than a week, because it is like it's like a gamble. You just take a gamble for 2 days, 3 days, or maximum 1 week. You don't have to tell her that you are not my type always. Otherwise she might think something else and she'll be gone forever. So utilize this tip, guys. It's very powerful technique. So guys, तो फिर मिलते हैं दोस्तों, है ना. मुझे कमेंट करके बताओ कैसा लगा वीडियो. Do comment me below and tell me today's video, how was today's video. Till then, take care, goodbye. मिलते हैं फिर दोस्तों, अपना ख्याल रखो, बाय.